Remove your glasses. Say dedicandare kando bazete. Lift your voice अपनी and आवाज say, I love you, कहिए, Jesus. यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ। I love you, Jesus. कहिए, यीशु मैं आपसे प्यार करता I see a हूँ। lot of flowers in your family. मैं आपके परिवार में बहुत सारे फूल देख रहा हूँ। How many women are there in your family? आपके घर में कितनी स्त्रियां हैं? 2 of us. Who are the 2? Daughter and me. Daughter and me. Roses, roses, roses. Come. What's ancient doors will open for you and for your daughter. और जो आपके पुराने दरवाजे हैं आपके और आपके बेटी के लिए खुलेंगे। God is changing times and seasons for you. परमेश्वर आपके लिए समय और ऋतु को बदल रहा है। Cluck, cluck, click, clock. What is like a C in your family? C, clock, click, clock, click, clock, click. There is a season, there is a season which you have missed. It's like it was your time. Do you know God would have used you in the gospel? और शुभ वर्तमान में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने वाला था। It's like God had called you when you were a young woman. Not that you're not young, you're very young now. जब आप छोटी लड़की थी तब Not लड़की, छोटी लड़की थी. आप जवान स्त्री थी तब परमेश्वर ने आपको बुलाया। There was God called you for plowing the field, in a sense to serve Him. But you turned away from the Lord. प्रभु ने आपको सेविकाई के लिए बुलाया पर आप प्रभु से दूर चली गई। And the Holy Spirit is saying, और पवित्र आत्मा कहता I है, will change times, I will change seasons for you. मैं समय और ऋतु आपके लिए बदलूंगा। From this January to March, it will be like a new move upon your life. आने वाले जनवरी से लेकर मार्च तक परमेश्वर का नया कार्य आपके जीवन में होगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Holy Spirit, move right now. पवित्र आत्मा कार्य कीजिए। In the name of Jesus. The Lord is tying a jewel in your daughter's hands. A jewel. Like, how do you say? It's like a strange bangle. You should design it actually. You're into jewelry. Who's into jewelry? Huh? I'll give you the design from the Holy Spirit. You receive it? Take it. It's yours. Seriously, let me take somebody's hands. We put the bangle in the hand. और हम कंगन and we put it from here. This is not a bangle. This is like a strip. Like a strip, No. Hey, this is from the Holy Spirit. It is like a strip. You turn it on your hand and it fits your hand. And it can fit on any hand. Huh? I know, man. How do I say? Please receive this. It is like a straight thing. You just have to tie it around and it fits your hand. And it will come for your daughter. और वो आपकी बेटी के हाथ पर आ रहा है। Pastor, she's trying to move to Dubai. Sister, what of Dubai? The Lord is moving her only now. Don't tell her, don't go to Dubai. Thank you, Lord. In the name of Jesus. In Jesus' name. Please tell her, don't go to Dubai. Try for something else. The Lord is please speak her up. Don't go to Dubai. Sir, come here. Lift your hand to God. This woman is a woman of faith. Wow. What do you do for a living? I work in a bank, like a back office in audit. The Lord will cause you to shine. You'll not be in many. Oh. He's my father. I'm just asking about you. Does he work in the bank also? No. That's fine then. You're a woman of faith. आप विश्वास की स्त्री हैं। The Lord will cause things to happen in your life. और प्रभु आपके जीवन में ऐसे बड़े-बड़े काम करेगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। You are hidden. आप छिपी हुई हैं। Nobody looks at you. और कोई आपकी ओर देखता नहीं। And the Lord is saying, और प्रभु कह I रहे will put you on center stage. और आपको स्टेज के बीचों बीच परमेश्वर खड़ा करेगा। Lady, this is a word from the Lord. प्रभु से आया हुआ ये वचन है। Who is like an M in your family? आपके परिवार में किसका नाम M से शुरू होता है? Wait, man, I'm talking to him. Maria. Maria. Yeah. Michael. There's a problem with Michael here. This Michael, not with this Michael. Michael, your heart is closed because you have been hurt very badly. आपका हृदय बंद है क्योंकि आपको ठेस लगी है। Your heart is closed to the things of God. Now you may say, yes, my heart is open, but your heart is, I see, wounded. Today, Michael, open your heart to Jesus. यीशु के लिए अपने मन को खोलिए। You will see. Are you married? No. You don't want to get married.
What is this? My mother. Huh? My baba? My mother. Your mother should get. Mother's already married. She's on oxygen 24/7. I didn't ask you that. So you are Jesus Junior? No. Huh? This man is hurt very badly. He's offended with God. I asked you a question. Answer that question. Can you repeat? Can you shift it? Do you want a boy? Yes. That's a direct question. I, as a man of God, speak over your life, और परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपके and जीवन this will पर bring joy to your father. और ये बात आपके पिताजी को See his खुशी face. देगी This is a true daddy. और ये सच्चे I पिता है speak. कौन सा डैडी को नहीं चाहिए अपना बेटी को शादी होने का? Come on, चाहिए ना? Yes, चाहिए. ये right daddy है. I pray from today onwards. You know, in your family, I saw M, full M. बोल. करके रहे. हाँ. I have Merlin. My mother's Maria. My father Michael. My mama's name is Melchides. Melchizedek. Melchides. You know God is speaking to you. Yes. Take off your glasses. I speak the healing presence of Jesus. चंगाई की उपस्थिति प्रभु यीशु की मैं खोलता हूँ Lord, bless this young girl. और प्रभु इस जवान लड़की को आप आशीर्वादित I कीजिए pray that her outlook would totally change. और प्रार्थना करते हैं प्रभु उसका बाहरी रूप रंग Now, पूरी in तरीके the से name of Jesus, बदल जाए यीशु the के Lord नाम has में prepared a seat for you. और परमेश्वर ने आपके लिए एक At his जगह तैयार table. की है और एक I मेज pray for wealth, और मैं प्रार्थना beauty, करता हूँ honor, and धन riches के to लिए come to you. Out धन, now! आदर सम्मान और सुंदरता I आपके पास break the आए curse मैं श्राप को तोड़ता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में Today I speak healing over your wife. और आपकी पत्नी पर मैं चंगाई खोलता I हूँ speak health in her lungs, और उनके लंग्स में मैं चंगाई खोलता हूँ healing in her kidneys, और उनकी किडनीज में आपकी प्रभु की चंगाई आए healing from the head to the foot. सर से लेकर पैर तक चंगाई बहे I anoint her with the oil of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के तेल से मैं उन्हें अभिषिक्त करता हूँ Let her see her daughter's marriage. कि वो अपनी बेटी की शादी देखने पाए In Jesus' name. यीशु के नाम And में God's people said, Amen. Amen. Give them a big God और bless you इनके लिए right now. जोरदार ताली बजाइए प्रभु ने आशीषित करे Come in front. Jesus. You listen to today's message, huh? Huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Why do I see 7? How many people in your house? My grandmother and uncle doesn't stay with me. There is an evil handwriting against you और आपके that विरोध God is wiping away today. ऐसी दुष्ट बातें आपके विरोध में लिखी गई हैं जो That is परमेश्वर why, मिटा that रहा is है। why, that is why these things are happening in your family. और इसलिए ये बातें आपके परिवार में हो रही हैं Anoint your house with oil. अपने घर को तेल से अभिषेक्त The कीजिए Lord is He's setting you free. और प्रभु आप सभी को आजाद कर रहा है There's a great and revival going to come in your home. और आपके घर में एक बड़ी बेदारी आएगी I speak as a man of God over your life. और एक परमेश्वर का सेवक होने के Would you नाते believe in Jesus? Lift it up to God. Lift your hand to God. अपना हाथ प्रभु की और बढ़ाइए Thank you, Holy Spirit of God. धन्यवाद पवित्र आत्मा I see like multiples of 12. 12, 12, 12, 12. What is that? मैं 12 ऐसे अंक Don't worry, आपके that's जीवन में what- देख रहा हूँ You said yes, so that's why I'm asking you. And the number comes to like multiples of 12. 1, 0, 2, 4. Thank you, Lord. Multiples of 12. It's okay. The Lord is bringing you out of a deep pit और एक गहरे गड्ढे से परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा and है is putting you in a seat of authority. और अधिकार के जगह पे You परमेश्वर आपको रख रहा have है lost many things because of some foolish decisions you have made. बेवकूफ फैसलों की वजह से आपने बहुत कुछ खोया है It's not that you are a foolish woman, you are a wise woman, but you बहुत trusted the wrong people. पर आपने गलत लोगों पर भरोसा किया You trust people very easily. आप बहुत ही आसानी से लोगों And पर it has भरोसा करते cost हैं you a lot. और इसकी वजह से आपका भारी To the नुकसान हुआ है extent that you were supposed to give up everything and even go and die. इतना ज्यादा कि आपने हार मान ली थी और अब अपनी जान लेने वाली थी Yes.
today God is changing it. और आज परमेश्वर इस सारी बातों I को said बदल today रहा God है। is changing it. आज परमेश्वर ये सारी बातों को बदल Somebody रहा raise है। your hands and shout amen right now. और कोई अपने हाथों को Lift उठाकर your कहे hands and say आमीन। Holy Spirit. कहिए पवित्र आत्मा। Just raise your hand and say Holy अपने हाथ Spirit. उठाकर कहिए पवित्र आत्मा। Say Holy Spirit. कहिए पवित्र आत्मा। Turn every situation of mine. हर परिस्थिति को बदल Just wave दीजिए। your hand and say Holy Spirit. अपना हाथ हिलाकर कहिए पवित्र आत्मा। Turn every situation of mine मेरी हर परिस्थिति को पलट ले into the प्रभु। glory of God. परमेश्वर की महिमा में। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्यशाली And God's नाम में। people said, प्रभु के लोगों ने let's कहा give Jesus a clap offering and say आइए यीशु के hallelujah. लिए जोरदार ताली बजाकर कहिए हालेलुया।